Hello aspirants, welcome to CSAT FIT course. This is class 28 of CSAT FIT. In this class, we are going to discuss about percentage and this is part 1 of percentage. See, if we see percentage topic in UPSC CSAT exam in 2015, 3 questions are asked from percentage, and in 2016 again 3 questions are asked from percentage, and in 2017 2 questions, and in 2018 1 question, and in 2019 and 2020 2 questions are asked, and in 2021 4 questions are asked, and in 2022 2 questions are asked, and in 2023 1 question is asked from percentage. So this is an important concept. So in percentage we will have 4 to 5 classes and we will deal with percentage from basics to extensive level. We will try to cover every model of question asked in UPSC CSAT exam, UPSC CDS exam, UPSC EPFO exam and SSC exams. ठीक है, so सारे cover करेंगे. So first let's start with basics, that is percentage, right? Percent, 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 percent. What does it means is, say there is 60%. So how we can write is 60% is 60%, that is 100. 60 divided by 100, 60 per 100. So percent. So any number, say 5% is 5 divided by 100%. So that's what we'll write. So then आता है 12% of 50. 12% of 50, that is written as 12 divided by 100, 12% of 50. Okay, so here 50 2s are 100 and 2 6 are. So 12% of 50 is what? 6. Similarly 10% of 60. 10% of 60 means 10 by 100 into 60. So this is 0 0 cancel, 0 0 cancel, that is 6. So 10% of 60 is 6. Like that we can calculate. So now if we see, so percentage, so there is a easy way of calculating percentage. Let's look at that. So percentage calculation. Okay, rather there is easy method, that is say 10% है, ठीक है, 10%. So 10% of any number. So how we can do is put the point from right side after one digit. So let's understand what does this means. Say 10% of 20. 10% of 20. So put point from right. So right is this one. Okay, from right side after one digit. So after one digit. So after one digit right से शुरू करके, so 0.20. So right से शुरू करके after one digit put point. So this is what? 2.0. 2.0 is what? Nothing but 2. So 10% of 2 is nothing but 2. ठीक है, point रखते हैं तो 2. So similarly जैसे 10% of 200. So that is right side से शुरू करके 20.0 हो जाएगा. So 20.0 is nothing but what? 20. So rather than just calculating जैसे 10% of 200 like 10 by 100 into 200, ठीक है, फिर ये कैंसिल कर दिया. सो 10 2s आर, ठीक है, बचा हुआ 0 0s कैंसिल, बचा हुआ 20. रेदर देन डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू कैन जस्ट से सी 10% ऑफ से 203 इज व्हाट? ठीक है, 20.3. 20.3. ठीक है. सो दिस इज एक स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड से, राइट साइड पॉइंट फ्रॉम राइट साइड आफ्टर वन डिजिट. सो ये 10% के लिए. ठीक है, फॉर 10% we will do this. ठीक है, so say 10% of 2049. ठीक है, 10% of 2049, how we will do? That is 204
0.9, ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड पुट पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, ठीक है. 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, दैट वुड बी 10%, ठीक है. सो सिमिलरली 10% ऑफ 300 is so 30.0, that is 30. 10% of 300 is 30. so ये हो गया 10% का. then next is 1%, ठीक है. 1% कैलकुलेट करना, एंड इफ वी एबल टू डू 10% एंड 1%, वी कैन टेक आउट परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, ठीक है. वो बाद में देखते हैं. सो फॉर 1%, that is put the point from right side after 2 digits, after 2 digits, right. put the point from right side after 2 digits, ठीक है. so 1%, that is 1% of 100, ठीक है. 1% of 100 is राइट साइड से 2 जीरो, दैट इज 1.00, दैट इज 1, ठीक है. देन 1% ऑफ 20 इज इक्वल टू 1% ऑफ 20 इज 2 डिजिट्स के पहले, राइट. सो 0.20, 0.20 वुड बी द आंसर, ठीक है. जो 2 डिजिट्स के पहले रखना है, ठीक है. सो व्हेन वी पुट इट, दैट वुड बी 0.20. so 0 भी लिया तो 0.0 and 20 and 0.20 are same. then 1% of 300, 1% of 300 is 3, ठीक है. so 3 2 this part 0, 3.003 आ जाएगा. then 1% of 202, that would be 2.02, ठीक है. then 1% of 4509 is what? 45.09, 45.09. 2 digits के बाद from the right side 0 लगाना है, ठीक है. so that's how we can calculate 10% and 1%. now if we know how to calculate 10% and 1%, ठीक है, then we can calculate any other number का percentage. so let's look at this, ठीक है. बाकी मुश्किल तरीके बताते हैं परसेंटेज का, फॉर्मूलास एंड ऑल. ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ ऑल्सो इट हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ एनी नंबर. सो लेट्स सी वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज से क्वेश्चन इज 6% ऑफ 6% ऑफ 600, 6% of 600. so normal traditional method of doing is 6 by 100 into 600. 6% of 600 is that one. so zeros cancel, that would be 6 into 6 is 36. so 6% of 600 is 36. अब ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है. अब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करना है तो वो कैसे कर सकता है. सी 6% ऑफ 600, so we know 1% is what. so starting from 1% is 600 का 1% चाहिए, ठीक है. 1% is 1% of 600 is starting from here, so 2 digits के बाद पॉइंट लगाना है, so that is 6. 1% is 6, ठीक है. now हमें 6% चाहिए, ठीक है. that is 1 into 6 jar 6% आएगा. so here also you need to multiply 6 into 6 times, that is 36. so 36 is the 6% of 600, ठीक है. वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. देन नेक्स्ट इज से लेट्स डू वन मोर थिंग, दैट इज 7% ऑफ 3200, 7% of 3200. so traditional way is 7 by 100 into 3200. so zeros cancel, so 7 into 32, so that would be 224. 224 is the answer, that is 7% of से. अब इसके लिए so 1% is what? 32. 1% is 32, ठीक है. देन 7% चाहिए, ठीक है. 1 into 7, 7% आएगा. 1 into 7, so 32 into 7 करना है, ठीक है. उससे आ जाएगा 224, ठीक है. दैट इज इजी, राइट. देन आओ नेक्स्ट इज 12%
12% of 200. 12% of 200. So that is 12 by 100 into 200. So this is the traditional method. So 12 twos are 24. So 24 is 12% of 200. Then 12 by 100, ठीक है, ये नॉर्मल मेथड हो गया. सो नॉर्मल मेथड इज, अभी हमें पता है, ठीक है, 10% इज 10% ऑफ 200 इज व्हाट, 10 में 1 के बाद वो लगाना है. सो दैट इज 20. ठीक है, ठीक है, 10% is 20. Now 1% is what? 1% is 2. 1% is 2. So we need 10 plus 11. 11% हो गया. फिर एक और 1% is 2. ठीक है, so this add this, that is 12%. So 12% is equal to कितना आया? 20 plus 2 plus 2, that is 24. ठीक है, so 12% is 24. राइट. सो नेक्स्ट आता है, ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, सो 1% से भी कैलकुलेट करना है, वी कैन डू इट. सो 1% इज 2. सो 12% इज, बाई 12% इज 12 इंटू 2, 2 इंटू 12. ठीक है, सो दैट इज 24. ठीक है, सो लाइक दैट. सो लेट्स डू वन मोर थिंग. सो अब आ गया हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज. सो लेट्स टेक 2% ऑफ 292. ठीक है, 2% ऑफ 292. सो वन वे ऑफ डूइंग इट इज 2 by 100 इंटू 292. ठीक है, सो 292, सो दैट इज, सी 100 by 292 इज, सी 292 डिवाइडेड by 100 इज, दिस इज 2.92. ठीक है, जब डिवाइड बाई 100 करता है, सो जितने भी जीरोस नीचे होता है तो उधर पॉइंट लगाना होता है. सो दिस इज 2.92. सो दिस वुड बी 2.92. सो 2 इंटू 2.92 हो जाएगा, 2 इंटू 2.92. ठीक है, इफ वी डू इट दैट वुड बी 5.84 is the multiplication. So 2% of 292 is 5.84. Then our traditional way of doing it is what? So 1% we know is 2.92. ठीक है, 2 उसके बाद पॉइंट लगा दिया. देन 2% is what? 2 into 2.92. ठीक है, यही 1% इंटू 2 है, 2% है. सो 2.92 इंटू 2, ठीक है, दैट वुड बी 5.84. 5.84. ठीक है, देन आता है नेक्स्ट, दैट इज 4%. 4% of 400. 4% of 400. So that is 4 by 100 into 400. ठीक है, so this is zeros zeros cancel, so 4 4s are 16. So 16 is the normal way of doing it. ठीक है, but our way of doing it is 1% is equal to 4. So 4% is equal to 4 into 4, that is 16. ठीक है, so next is, say that is 40%. 40% of 400. ठीक है, 40% of 400. So that is, we know 10% is what? 10% is 40 and 40% is 10% into 4 into 4. So 40 into 4, that is 160. So 160. Similarly we know 1% is 4. ठीक है, 1% is 40% है, 400 है. ठीक है, 1% is 4. सो वी नीड 40% चाहिए. ठीक है, सो 400 का 40%. ठीक है, सो 40% इज 40 टाइम्स. सो 4 इंटू 40, दैट इज 160. ठीक है, सो ये होता है 160. ठीक है, सो 40% ऑफ 400. सो एनी परसेंटेज वी आर गिवन, से 32% ऑफ 400. ठीक है, क्वेश्चन इज 32% of 400. So we know 1% is equal to 4. ठीक है, so 32% is equal to, ठीक है, 4 into 32, 4 into 32, 8, 12. So 128. So 128 is answer. अगर ये नहीं है तो 10% से भी कर सकते हैं. So 10% is 40. ठीक है, so 30% is 40 into 3, that is 120. and ठीक है, 30% को पता चल गया हमें
हमें बेस्ट रेस्ट बचा हुआ 2% चाहिए. सो 2% कैन बी डन विथ 1% है, ठीक है, 1% इज 4, ठीक है, 2% इज 8. सो 30% प्लस 2% दैट इज 32%, right? So that would be 128, ठीक है. So that's how. So by knowing, by we know 10% and 1% कैसे निकालना है, we can take percentage of any number, ठीक है. So we can do percentage of any number. Say 14%, ठीक है, 14% of 48, ठीक है, 14% of 48, ठीक है, 14% of 48. So we know 10% is equal to 4.8, ठीक है. Then 1% is equal to 0.48, ठीक है. So अब 4% और चाहिए. So 0.48 into 4, ठीक है, 0.48 into 4 से 4% आएगा. So 4%. So 8 4s are 32, 4 4s are 16, 16 plus 3 is 19, ठीक है, is 19. So 2 points a point a, so 1.92. So 4% is 1.92 and 10% is 6 point. So 14% चाहिए. So 4.8 जो 10% का प्लस 4% का दैट इज 1.92, इनको ऐड करना है. सो ये 4.8 कैन बी रिटन एज 4.80. सो 2 देन 9 प्लस 8 17, ठीक है, पॉइंट 4 plus 1 5 6. So 6.72 is the answer, ठीक है, 6.72 is the answer, right? 6.72. So 14% of 48 is, so basically if we know 10% कैसे कैलकुलेट करना है and 1% कैलकुलेट करना है, then सीधा मल्टीप्लीकेशन एडिशन ही करना है, ठीक है. सो लाइक दैट वी नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज रेदर देन फॉर्मूला से लाइक 4% ऑफ 48 दिया, नॉट 4/100 इंटू 48, फिर ठीक है, फिर 2 2s are 2 50s are, ठीक है, फिर 2 25s are, देन 48/25, ये वो सब नहीं करना है, ठीक है. सिंपली वी नो बाई 1% इज 0.48. सो हमें 4% चाहिए, इंटू 4 करो, सो यू विल गेट 4% ऑफ 48, ठीक है. सो बाई यूजिंग दिस टेक्निक्स वी नीड टू डू. सो ठीक है. सो देन लेट्स मूव टू क्वेश्चंस, ठीक है. सो क्वेश्चंस वी विल सॉल्व एंड वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मच बेटर, ठीक है. सो नाउ, ठीक है, जब फोर्स वगैरह में दिया है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट. नाउ क्वेश्चन इज 2/3 is what percentage of 1/3? 2/3 is what percentage of 1/3? So here we need to understand formula. अब formula रटने की भी जरूरत नहीं है. Formula is simple thing, that is percentage is equal to given quantity divided by total quantity into 100, ठीक है. गिवन क्वांटिटी बाई टोटल क्वांटिटी, ठीक है. टोटल क्वांटिटी हमेशा नीचे आएगा, ठीक है, टोटल क्वांटिटी हमेशा नीचे आएगा, दैट वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है. परसेंटेज में टोटल क्वांटिटी विल बी डाउन. सो टोटल क्वांटिटी, दिस इज 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3. सो 1/3 का परसेंटेज चाहिए, ठीक है, दैट इज 4 इज व्हाट परसेंट of 8. So 4/8, what percent of 8? This is the original quantity, ठीक है. 4 is what percent of 8? So 8 is the original quantity. So वो नीचे आएगा 4/8 into 100. So 1 2, so 1/2 into 100, so cancel हो गया 50 times, so that is 50%. So 4 is 50% of 80, ठीक है. ऐसा कैलकुलेट करना है. गिवन क्वांटिटी बाई टोटल क्वांटिटी इंटू 100. सो इन दिस क्वेश्चन गिवन क्वांटिटी इज 2/3. सो 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3? सो 1/3 इज द टोटल क्वांटिटी, ठीक है. 2/3 इज द गिवन क्वांटिटी. 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ इंटू 100, ठीक है. सो नाउ इफ वी डू दिस, सो अब ये नंबर ऊपर आ गया, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में. वो कैसे आएगा? दैट इज 2/3 इंटू 3/1, ये ऊपर आएगा, ठीक है. जैसे ये नंबर ऊपर आएगा एंड 1 नीचे आएगा, ठीक है. इफ वी ब्रिंग नंबर, ठीक है,
नंबर को ऊपर लाता है तो वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। दैट इज 2/3 इंटू 3/1 इंटू 100। सो 3 कैंसिल एंड 2 इंटू 100/1 आएगा, सो दैट इज 200%। सो 2/3 इज 200% ऑफ 1/3। सो 1/3 से 2/3 बड़ा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। देन नेक्स्ट इज 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100, ठीक है। ये नहीं कि 4/100, 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100। 100 में 4 कितना परसेंट है, ठीक है। 100 में 4 इज कितना परसेंट, ठीक है। दैट इज 4/100 इंटू 100, ठीक है। सो दैट इज given quantity by original quantity or total quantity. Total quantity is 100 into 100, so 100 gets cancelled, so that is 4%. So 4 is what percent of 100? 4 is 4% of 100, ठीक है। अब 100 में हमें पता है 1% is 1, ठीक है। सो 2% is 2, 3% is 3 and 4% is equal to 4, ठीक है। सो now 4/3 is what percent of 1/3? So 1/3 is the original or total. So 4/3 is what percent? So that is 4/3 divided by 1/3 into 100, ठीक है। So that is 4/3. So 1/3 ऊपर आएगा तो that would be 3/1 into 100. So 3 gets cancelled, so that would be 400%. So 4/3 is 400% of 1/3, ठीक है। So formula is, ठीक है। So day to day calculations we can do using this, ठीक है। We will be using in solving questions, we will be using these approaches, right? Normal to solve these kind of questions जहाँ fractions वगैरह होता है, so there we use this formula. Percentage is given quantity by total quantity into 100. So total quantity हमेशा नीचे आएगा, that thing you need to remember, ठीक है, into 100. So now let's see this question, that is 80 meter is what percent of 5 kilometer? So original content or original quantity or total quantity is 5 kilometer, ठीक है। So 80 meter, ठीक है। So and 5 kilometer is what? 1 kilometer have 1000 meters, right? So 5000 meters into 100. Basically we are turning kilometer into meter. So 0 zeros cancel and this 0 cancel, so this is 8/5, ठीक है। 8/5 कितना परसेंट है? सो 5 8, सो 5 ones are 5, 3 0 3 0, तो 0 लगाया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। सो 5 6 are 30, ठीक है, 0, सो दैट इज 1/6%, ठीक है, 1/6%. Again here also we used formula, that is given quantity by total quantity into 100, given quantity by total quantity into 100, ठीक है। So now let's see next question, that is what percent of 3 day is 12 hours? What percent of 3 day is 12 hours? So 3 days में this is the total, right? This is the original. 3 days में 12 hours कितना है, ठीक है। 12 hours, what percentage of 3 day is 12 hours? So this is the original, ठीक है। This is the total quantity is 3 days, so total quantity नीचे आएगा, that is 3 days is, तो hours में change करना है, ठीक है। 3 into 1 day has 24 hours, ठीक है। So 3 into 24 hours, so ये आ जाएगा 12 hours, ठीक है। that is given quantity, ठीक है। this is original और total quantity हमेशा नीचे आएगा into 100, ठीक है। so 3 into 24 is 12 by 24 3s are 4 3s are 12, 1 3 2s are 6, 72 by 100. So 12 72, so 2 6 are 2 36 are 36 72, so then 6 6 are 36, so 6 6 are is 36, so that is 100 by 6, so 600, so 6 ones are 6, 4 0, 6 6 are 36, so 4.0, 6 6 are 36, so on a repeat होता रहेगा 16.66%. So here 16.66%, so 16 by
23 percentage. Now 16 by 23 percentage is equal to 16.3 percentage. Okay, say 16, see this 16 2 by 3 can be written as okay, this can be written as 3 into 16 plus 2 divided by 3. So देखो 3 into 2, see in number system we have already done this. So 3 into 16 plus 2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके प्लस 2 ऐड करना है बाई 3. सो दैट वुड बी 3 6 are 48, 48 plus 2 is 50. So 50 divided by 3. ठीक है, अगर 50 divided by 3 भी किया so ऐसा भी है. So 50 divided by 3, sorry 3 50. So 1s are 3, 2 0, 3 6 are 18. ठीक है, so remainder is 2. So this would be written as 16 2 by 3. 16 2 by 3. We'll start from here and we will write like this. So we have already discussed this while doing number system decimal वाला chapter में. So 16 2 by 3. ठीक है, 16 2 by 3. ठीक है, so then let's see next question, that is 30% of x minus y is equal to 18% of x plus y. Then ratio of x is to y is equal to, so here it is given 30% of x minus y, that is 30% of x minus y is 30 by 100 into x minus y. ठीक है, जैसे 10% of 40 can be written as 10 by 100 into 40. ठीक है, so similarly 30% of x minus y can be written as 30 by 100 into x minus y is equal to 18 by 100 into x plus y. ठीक है, x plus y, x minus y. ठीक है, then ratio of x is to y is equal to, so 3 by 10. ठीक है, 3 by 10. ठीक है, so 18 by 10. so ये हो गया cancel 0, sorry either, sorry let's do like this. So let's solve it like this. So that is 30 by 100 into x minus y is equal to 18 by 100 into x plus y into x plus y. So here let's do calculations like this. So ये cancel हो गया. ठीक है, ये 9s are and 50s are, right? ठीक है, so 9s are and 50s are, and so here 3 and 9 we can cancel. See this 3 क्योंकि multiplication form में this 3 and this 3, so 3 3s are 9 and this 50 and 10 we can cancel. So 10 5s are 50. So what we have left out is x minus y is equal to, ठीक है, ये सब 1 1 हो गया. ठीक है, so x minus y is equal to 3 by 5 into x plus y. ठीक है, so that is 5 into x minus y is equal to 3 into x plus y. ठीक है, so that is 5x minus 5y is equal to 3x plus 3y. So 5x minus 5y is equal to 3x plus 3y. So 5x minus 3x is equal to 5y plus 3y. So that is 2x is equal to 8y. So x 2 4 cancel. So that is x by y is equal to 4 by 1. So x is equal to 4, y is equal to 1. So x is to y is equal to 4 is to 1. ठीक है, so 4 is to 1, A is the answer, right? So 4 by 1, 4 is to 1, A is the answer. So like this we can solve. So now let's see the question. So this is question asked in UPSC CAPF 2021 paper. ठीक है, so in CDS paper percentage में ज़्यादा questions है नहीं. So that's why I have taken questions from UPSC CAPF and SSC. So this question is asked in SSC exam, some SSC exam. ठीक है, this question is asked in UPSC CAPF 2021. ठीक है, so 2021
So let's see the question, ठीक है, and solve the answer. So question is, if 35% of a number is 416 more than 27% of the same number, then the number is, ठीक है. So question is, ठीक है, say that is 35% of x, 35% of a number, ठीक है, of x, 35% of a number x, number, let number be x, 35% of a number is equal to, is 416 more than 416 plus 27% of x, ठीक है, that is what given. So 35% of a number, 35% of a number x is equal to 416 more than, so 416 plus 27% of x, ठीक है. अब इसको इधर लेके आ गया, ठीक है, that is 35% of x minus 27% of x is equal to 416 हो जाएगा, ठीक है. So this is 35% of x minus 7% of y is, this is 8%, ठीक है, 8% of x, ठीक है, 8% is equal to 416, ठीक है, 8% of x is equal to 416. अब हमें क्या है, 8% पता है, so we can get 1%. so 1% is what, 416 divided by 8, ठीक है. so अब देखो 4 5s are 20, sorry 8 5s are 40, ठीक है. so 16, so 8 2s are 16, so that is 1% is what, 1% is 52, ठीक है, 1% is 52, ठीक है, because 8% है, ठीक है, 1% is 416 divided by 8, ठीक है, that is 52 times. so अगर 1% पता है, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, then the number is, ठीक है, 1% is 52, we need 100%, right. so into 100, that is 5200, ठीक है, 5200, ठीक है. so this is nothing but what, 8%. otherwise इधर ये भी लिख सकते हैं 8% of x is equal to 416, so that is 8 by 100 into x is equal to 416, ठीक है. so that is x is equal to 41600 divided by 8, ठीक है. अब divided by 8, so that would be x, so x 416 is 52 times, 8 से 52 times कटेगा, so that would be 5200, ठीक है. so x is equal to 5200, that is the answer, ठीक है. अगर ऐसा ऐसे सीधा ये भी कर सकता है, बट वी नो अगर 8% आता है तो दैट इज 416 है, तो 1% लाके उसको मल्टीप्लाई करने से वो भी आएगा, या तो ऐसा भी कर सकता है, बोथ आर सेम, ठीक है. सो दिस इज आस्क्ड इन 2021. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, if 15% of A is double of 30% of B, then the ratio of A to B is, ठीक है. so this is question asked in CAPF 2020, ठीक है. CAPF पेपर that is UPSC कंडक्ट करती है, एंड दे कंडक्ट फॉर एग्जाम्स लाइक CASF, ठीक है, BSF एक्सेट्रा का ऑफिसर सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है. सेम UPSC, द वंस हु आर गिविंग UPSC प्रीलिम्स दे कैन टारगेट दिस पेपर आल्सो, ठीक है. especially the ones who are interested in the uniform job, ठीक है. it is like high A grade job है. so this is question is 15% of A is double of 30% of B, ठीक है. so 15% of A is equal to double of, that is 2 times of 30% of B, ठीक है. so this is 15 by 100 into A is equal to 2 into 30 by 100 into B, ठीक है. so that would be 15 by 100 into A is equal to 2 into 30 by 100 into B. so now let's do the cuttings and all. so let's multiply and then we can cut it, right. so this is 15 by 100 into A is equal to 60 by 100, 2 into 60 by 100 into 3, ठीक है. फिर काट सकते हैं, so 100 cancel because everything is we are multiplying. then 15 4s are 60, so A is equal to
4b, ठीक है. So a is equal to, then a by b is equal to 4 by 1, ठीक है. So a is to b is equal to 4 is to 1 is the answer, ठीक है. So this question and this question are of similar nature, but वही expression ही अलग है, ठीक है. So only here it is expression in the form of x plus y, and here expression is in the form of, ठीक है, a and b's, ठीक है, double of number. So ratio आ गया. So now let's do another question, ठीक है. That is, this is question asked in CAPF 2019, UPSC CAPF 2019. That is, 1/6 of a number is 53. What will be the 57% of that number? That is 1/6 of a number, 1/6 of x, say a number is x, is equal to 53, ठीक है. 1/6 of x is equal to 53. So now we can say x, ठीक है, 6 है, x is equal to 53 into 6, ठीक है. So this is nothing but what? This is nothing but x by 6 is equal to 53, ठीक है. From here it is x is equal to 53 into 6. So x is equal to 53 into 6 किया तो 6 3s are 18 and 6 5s are 30, so 31. So x is equal to 318, ठीक है. So number is 318, ठीक है. So number is 318. Now what we need, that is 57% of that number. So 57% of 318. So we know 10% is what? 10% of x is what? 31.8, ठीक है. So 50% is 31.8 into 5, 31.8 into 5, ठीक है, that is 50%. So 8 5s are 40, 5 1s are 5 plus 9, 4 is 9, then 3 5s are 15, ठीक है. So that is 159 point and 1 is, so 159.0, ठीक है, 159.0, ठीक है. ये हो गया 50% is 159.0. Now we need 7 more percent. So here 318 का 1% is what? ठीक है, 318 का 1% is 3.18, ठीक है, 3.18. So 2% is what? So we need 57%, right? So 7% is what? 3.18 into 7, ठीक है. So 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 1s are 7 plus 5, that is 12, ठीक है. Then 7 3s are 21, 21 plus 1 is 22, so 22.26, ठीक है. 159.0 plus 22.26, that is 26 comma 9 is 1, 9 plus 2 is 1, then 7 8, 181.26. So 181.26 is the answer, ठीक है. क्या कर रहा है? We got the number, ठीक है, then we are getting 50%, ठीक है, then 1%, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है नॉर्मल, ठीक है. So the techniques we will be using in the questions, ठीक है. So this is the answer. That let's see next question. See again, this is question asked in CSAT paper, ठीक है, CSAT paper of 2019, ठीक है. ये UPSC अपना CSAT का पेपर है, so important. So that is A and B are two heavy steel blocks, ठीक है. A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, ठीक है. So ये है, ठीक है, B है, ठीक है, two heavy steel blocks, ठीक है. A, if B is placed on top of A, so B is placed on top of A, ठीक है, top of A, the weight increases by 60%, ठीक है. So if B is placed on top of A, ठीक है, top of A, the weight increased by 60%. So इसका weight है increased by 60%, increased by 60%, ठीक है. जब प्लेस किया तो इन दोनों का, ठीक है, दिस इज 60% मोर देन वेट ऑफ ये, ठीक है. सो हाउ मच वेट विल reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from top of A, ठीक है, B is removed from
top of A. So now let's take, see, let A is equal to 100 kg. ठीक है, ये 100 kg है. ठीक है, let's take A is equal to 100 kg. ठीक है, A is taken as 100 kg. ठीक है, if B is placed on top of A, the weight increases by 60%. ठीक है, when B is placed, ठीक है, weight increased by 60%. So A plus B is equal to 160 kg. 160 kg. ठीक है, ये we took 100 kg and when B is placed, weight increased by 60%. weight increased by 60%. ठीक है, so weight of A plus B is 160 kg. A plus B is 160 kg. So weight of A plus B is 160 kg. The weight, if B is placed on top of A, the weight increases by 60%. The weight increases by 60%. ठीक है, the weight increases by 60%. So 160 kg. How much weight will reduce with respect to total weight of A and B? Total weight of A and B, how much will be reduced if B is removed from top of A? अब B remove किया, again B is removed from top of A. क्वेश्चन क्या है, अब how much weight will reduce with respect to total weight of A and B? Total weight of A and B. So that is, ठीक है, that is what? So they are asking कि by original weight है, ठीक है, that is 160, ठीक है, 60 into 100, ठीक है. So same, we are using formula, right? That is percentage formula is what? Percentage is equal to, ठीक है, total quantity by given quantity by total quantity into 100. given quantity by total quantity into 100. ठीक है, that is the percentage formula, right? So अब how much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from top of A. ठीक है, so with respect to total weight of A and B, how much weight will be reduced? ठीक है, if B is removed. So B is removing, so 60 by 160 into 100, 0 0 cancel. ठीक है, 6 2 3s are and 2 8s are, so that would be again 2 50s are and 4s are, so that is 150 by 4. Again it would be cancelling out 75 2. So 75 by 2 is 37.5 percentage. So 37.5 percentage weight will reduce, ठीक है, with respect to total weight of A and B. ठीक है, so total weight of A and B is 160. ठीक है, then B remove कर रहा है, so B remove कर रहा है, तो this would be the given quantity. So it would be 37.5% of total, that is 160 में. ठीक है, 60 में basically this is nothing but by 60 is what percent of 160. ठीक है, यही क्वेश्चन है, 60 is what percent of 160. So that is 60 by 160 into 100. ठीक है, that's what question is asking. ठीक है, so 60 is what percent of, so because 60 we are removing, is 60 is what percent of A plus B, that is 160 into 100. ठीक है, so that would be the answer. ठीक है, then आता है next question. This is question asked in UPSC CSAT paper 2019. ठीक है, 2019. So let's read the question. That is, Raju has 9,000 with him and he wants to buy a mobile handset. Raju has 9,000 with him. Raju has rupees 9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. Therefore he borrows 2,000 from the friend. Then, ठीक है, Raju has 9,000. By Raju has rupees 9,000. ठीक है, 9,000 and he wants to buy a mobile phone खरीदना है. ठीक है, he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. So 90%, 9,000 is what? 9,000 is 75%, ठीक है, of mobile cost. ठीक है, mobile phone cost. ठीक है, 75%.
ठीक है, सो 75%, ठीक है, therefore he borrows 2000 from a friend, ठीक है, सो 75% is 9000, ठीक है, सो नाउ वी नो बाई 75% 9000 है, तो 1% कितना होगा, ठीक है, 1% is how much, that would be 1% would be 9000 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है, 75 से करो, सो 75 ones are 75, देन 9 1 15 बचा, सो 0, सो 0 नीचे आएगा, सो 75 2s are 150, ठीक है, फिर 0 आएगा, सो 120, सो 1% इज 120, ठीक है, सो 1% कितना है, 1% इज 120 रुपीज, सो 100% कितना हो गया, 100% इज 12000, ठीक है, सो दैट इज प्राइस ऑफ 100%, दैट इज प्राइस ऑफ मोबाइल फोन, ठीक है, प्राइस ऑफ मोबाइल फोन, टोटल प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इज 12000, ठीक है, प्राइस ऑफ मोबाइल फोन इज व्हाट 12000, अब 9000 है, ठीक है, 2000 ही बोरोस फ्रॉम फ्रेंड, सो नाउ 9000 प्लस 2000, ठीक है, सो ही हैज 11000, ठीक है, 11000 है, बट फोन कितना है 12000 का, सो ही नीड्स 1000 मोर, सो Raju still doesn't have enough amount to buy a handset S. Raju has exactly the same amount to, no, he has only 11000, ठीक है, but he needs 12000, एक और 1000 चाहिए, ठीक है, Raju has enough amount to buy the handset and he will have 1500 with him after he buy the, no, Raju has enough amount to buy the handset and he will have 1000 with him after buying, no, so answer is option A, that is Raju still doesn't have enough amount to buy the handset, ठीक है, राजू स्टिल डजंट हैव, ही नीड्स 1000 मोर, ठीक है, 12000 का फोन है, ही हैज ओनली 11000 आफ्टर बोरोइंग 2000 आल्सो, ठीक है, सो दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द आंसर, देन आता है CSAT 2015 का क्वेश्चन, ठीक है, CSAT 2015, ठीक है, सो सी दीज क्वेश्चंस आर इजी, ठीक है, बट आफ्टर 2023 UPSC हैज इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल, राइट, इट हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस 2020 एंड ऑल, ठीक है, सो अब हो सकता है दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, बट ये क्वेश्चंस भी बेसिक्स क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व more difficult level of questions also. So in classes also I have framed questions in such a way we are going from easy questions to difficult level questions, ठीक है, so if this is part 1 of percentage, so the moment you go on to part 2, part 3, part 4, the level of questions will be increasing, of course I will be like questions भी models wise भी होगा, so each model will have easy questions and difficult questions also, but in general I am following this trend, ठीक है, हम इजी लेवल से लेके मुश्किल लेवल तक सब कवर करेंगे, बिकॉज अगर ये क्लास नहीं किया तो वो बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा, वी डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑल्सो, so then it would be difficult, so it is important that we go from level 1 to level 2 level 3 in a sequence manner, ठीक है, so let's do the next question, ठीक है, so this is question asked in CSAT 2015, ठीक है, so 2015 the question is the proportion of expenditure on various items of two families A and B are represented in bar charts, ठीक है, so family A का total expenditure है 20,000 per month and family B का total expenditure is 1 lakh per month, ठीक है, 1 lakh per month, ठीक है, 20,000 per month, 1 lakh per month, ठीक है, following two families A and B are represented in following bar charts, ठीक है, फॉलोइंग बार चार्ट्स, ठीक है, सो ये है फैमिली ए टोटल एक्सपेंडिचर इज 20,000 पर मंथ, फैमिली बी इज 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, ठीक है, सो अब देखो, सो क्वेश्चन फ्रॉम दीज चार्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट, ठीक है, फैमिली ए स्पेंड्स मोर मनी ऑन फूड देन फैमिली बी, नाउ ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मंथ वाइज दिया, सो फैमिली ए इज स्पेंडिंग फूड में कितने स्पेंड कर रहा है, सो दैट इज 50% ऑफ 20,000, सी फूड में 50% ऑफ 20,000, सो 10% इज 2,000, so 2,000 into 5 is 10,000, so family A is spending 10,000 on food, ठीक है, 30% on other items, so
10% is 2000 we know, ठीक है. So 30% is 2000 into 3, ठीक है, that is 6000 on other items. Then 20% on education, that is 10% is 2000, so 4000 on education. 4000 on education. Similarly, family A is spending, family B is spending total 1 lakh per month, total 1 lakh per month, so 30% of education, ठीक है, 30% on education, so 30% of 1 lakh, ठीक है, 10% is 10,000, 10,000, 30,000 on education they are spending, ठीक है, 60% on other items, so 10%, so 60,000 on other items, ठीक है, then 10% on food, so 10% is see the 10,000 on food. So that's what we got. So now family, from these charts we can conclude that family A spend more money on food than family B. So no, they are spending equal amount on food, okay. So this would be incorrect, okay, because family A is spending 10,000 and family B sorry, so family A is spending just 1,000 rupees, sorry, so 50%, so 50% 2000, so 10,000, so same amount, so 10,000 है, ठीक है, so 10,000 they are spending same amount, so ये गलत हो जाएगा. Family B spend more money on food than family A, so food, family B, no, they are spending equal, family B spend more money, no, they are spending equal amount, 10,000 food, so food में. Then family A and families B spend the same amount on food, yes, same amount, both are spending 10,000, so this is correct. Expenditure on food of family A and family B cannot be compared, no, they can be compared, they are same, so option C is the answer. Again very easy question, 2015 का question है, and with basic percentage formula, yeah, for percentage calculation we can easily write it, right? So now let's move to next question, okay. So this is question asked in CSAT 2023. So here this is not a direct percentage based question, but we need basics of percentage. अगर अब वो ये देखो, if we don't know basics of percentage, अब इस question में कैसे कैलकुलेट, जैसे 99% कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट होगा? सो दैट्स वाई वी नीड टू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. Let's see the question. So question is, in an examination maximum marks for each of the 4 papers, namely PQRS, are 100. So in an examination maximum marks of 4 papers, ठीक है, PQRS, so maximum marks is 100, 100, 100, 100, ठीक है, each of the 4 papers is 100. marks scored by students are in integers, ठीक है, integers में score किया है students, that is integers are what, integers are minus infinity to infinity, ठीक है. अब मार्क्स से नेगेटिव में तो नहीं है, ठीक है, नेगेटिव में तो नहीं आ सकता, सो दैट वुड बी फ्रॉम 1 2 3 4 सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ठीक है. सो 100 है तो 100 तक, सो मार्क्स स्कोर्ड कैन बी 3 4 टिल 99 और 100. अब 100 से ज़्यादा तो मैक्सिमम मार्क्स ही 100 का है, सो 98 99 97 सो ऑन, ठीक है, 100 तक. दीज आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है. एंड ए स्टूडेंट कैन स्कोर 99% in n different ways, ठीक है. सो ए स्टूडेंट कैन स्कोर 99% मार्क्स, ठीक है, 99% मार्क्स इन डिफरेंट वेज. जैसे कैसे कर सकते हैं 99% मार्क्स, जैसे वन वे इज 100, ठीक है, पेपर P में 100 आउट ऑफ 100 आ गया, Q में 100 आउट ऑफ 100 एंड R में 100 आउट ऑफ 100, बट 99% के लिए, ठीक है, 99% के लिए कितना चाहिए, ठीक है. सो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 400, ठीक है, टोटल मार्क्स इज 400, ठीक है. 99% इज व्हाट, 99% इज 400, दिस 400 इज 100%, राइट, ठीक है. सो 99% इज व्हाट, दैट इज 100 माइनस 1%, ठीक है, 100% माइनस 1%, ठीक है. अब 100 माइनस 1, सो 1% इज व्हाट, 100% इज 400 माइनस 1% इज 4, सो दैट इज 396 मार्क्स, ठीक है. 99% मार्क्स लाना है तो 396 मार्क्स लाना है. सो टू गेट 396
एक में 96 आना चाहिए, सो दिस इज 396. सो देन सेकेंड वे इज भाई ये हो सकता है एस, ठीक है, एस में 96 आया, सो ये हो सकता है 96 आर में आया, ठीक है, देन रेस्ट ऑफ दिस 100, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वे टू स्कोर 99%. सो ही इज दिस इज वन केस, दिस इज सेकेंड केस, ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज a student can score 99% in n different ways. What is the value of n? ठीक है, that is how many ways are there in which students can score 99%. That is 99% is total 396 marks. ठीक है, how many different ways are there? ठीक है, so now see here, this is third one. Third case is q में 96, then 100, 100, 100. Then fourth case is 96, 100, 100, 100. ठीक है, so 1 2 3 4 cases with 96. See, ठीक है, with 96 4 cases are possible. ठीक है, 96 के साथ 4 cases are possible. That's what we have written, right? ठीक है, we have written. Now fifth case is that can be 99, 99, 99, 99. ठीक है, 99, 99, 99. So that is also 396. So but with 99, 99, 99, that is only one case is possible. One case क्यों है? See, in permutation and combination we will discuss about it. So this can be written as 4 factorial by 4 factorial. ठीक है, so that is 4 factorial by 4 factorial is nothing but 1. ठीक है, so only one way we can write it. अब 96 के साथ, ठीक है, this can be written as, ठीक है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल. ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल क्यों लिख रहा है? बिकॉज 3 आर कॉमन नंबर्स. ठीक है, सो 300 से, ठीक है, दैट वुड बी, सो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1. सो ये कैंसिल हो जाएगा, सो 4 वेज, सो इधर आ जाएगा 4 वेज. ठीक है, 4 इधर 1 वे विथ रेस्पेक्ट टू 96. ठीक है, देन next way is, sixth way is जैसे 98, 98, ठीक है, 100, 100, ये भी हो सकता है. ठीक है, नाउ दिस इज 4, ये है. सी दिस वन वी विल बी स्टडीइंग इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. डोंट वरी इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. बस ये क्वेश्चन इसीलिए इंक्लूड किया हूँ बिकॉज परसेंटेज थिंग इज यूज्ड. ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, दिस क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ परसेंटेज एंड परम्यूटेशन. ठीक है, परम्यूटेशन. अगर नॉर्मल मैनुअल वे में सब लिखना है, ठीक है, द आंसर इज 35. सो देर आर 35 पॉसिबल वेज. अगर वो सब लिखना है तो वो काफी मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. सो विथ परम्यूटेशन वी कैन इजिली सॉल्व. सो नाउ अनदर वे इज 98, 98, 100, 100. अब इसको कितने वेज में लिख सकते हैं? सो दैट इज 4 फैक्टोरियल बिकॉज 4 numbers we are using, then 2 same numbers we are using, so we will use 2 factorial into 2 factorial. ठीक है, so see if you are not getting this, why I am using 4 factorial by 2 factorial into 2 factorial, don't worry. ठीक है, don't even think. When we cover permutation and combination आपको पता चल जाएगा why we are writing it. ठीक है, this here I just want to solve this question. So that would be 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 factorial is 2 into 1 and 2 factorial is 2 into 1. So ये cancel हो जाएगा, 2 2. So 3 into 2 is 6. So 6 ways we can write 98, 98, 100, 100. अब वो क्या ways हो सकता है? 68 6 ways. Just let's check. That is 7th model is, so 298 using, ठीक है, 100, 98, 100, 98. ठीक है, ये एक हो सकता है. देन 8 इज 100, 100, 98, 98. ठीक है, देन 9th वे इज 98, 100, 100, 98. ठीक है, देन अनदर वे इज 100, 98, 98, 100. ठीक है, देन अनदर वे इज 98, 100, 98, 100. ठीक है, सो
1 2 3 4 5 6, ये 6 वेज में 98 को यूज करके टोटल 396 मार्क्स है, ठीक है, सब में 396 मार्क्स. सो इन 6 वेज वी कैन गेट इट बाय यूजिंग 298, ठीक है. सो देन अनदर वे इज टू गेट 396 इज, ठीक है, 12 तो, ठीक है. सो 100 100 99 98 99, ठीक है. दिस इज अनदर वे. सो दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है, 4 factorial by 2 factorial because 2 numbers are repeating. So 2 factorial. So that is 4 into 3 into 2 into 1 divided by 2 into 1. So ये हो जाएगा. So 4 3s are 12. So in 12 different ways we can write the numbers like this, ठीक है, by using 100 99 98 and 99, ठीक है. So 12 different ways. अब कैसे वो भी लिख सकता है. So 12, ठीक है, 12 बट टाइम कंज्यूमिंग है, तो वो ये while doing permutation and combination we will write all these possible ways, ठीक है. देन आ सकता है, ठीक है, अनदर वे इज 100 100 99 97, ठीक है, 99 97. So that would be 4 factorial by 2 factorial again because 200 रिपीटिंग, जितना एक नंबर रिपीट हो रहा है तो वो उतने बार 2 फैक्टोरियल, जितने बार रिपीट हो रहा है वो लिखेंगे. ये परम्यूटेशन में आउट देखेंगे. सो दिस वुड बी अगेन 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वुड बी 12 टाइम्स, ठीक है. सो 12 प्लस 12 is 24, 24 plus 6 is 30, 30 plus 1 is 31, 31 plus 4 is 35. So 35 ways we can, students can score 99% marks, ठीक है. So 35 ways में कर सकता है, ठीक है, because और हर केस में सम 396 होगा, 396 होगा, ठीक है. So that's the way to calculate, ठीक है, to do this question. We will study these kind of questions in permutation and combination extensively. So for this class that is the thing, ठीक है. In next class we will deal with percentage, few more concepts, right. So this is like basics of percentage, ठीक है. We are just understanding basics of percentage. So see you in next class, that is part 2 of percentage. Thank you very much. That's it for today's class. Bye.